नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेतर और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हर एक छात्र छात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय जो एक हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो अपना भविष्य का निर्माण करना चाहता है, अपने करियर का निर्माण करना चाहता है। वी ऑल स्टडी टुगेदर, वी ऑल स्टडी इंडिविजुअली, वी ऑल स्टडी इन गुड इंस्टीट्यूशंस, वी ऑल पे लॉट ऑफ मनी to get a good education, but then we all want to get a good job, but it is not possible sometimes. सभी को नौकरियां नहीं मिलती। फिर प्रश्न ये उठता है कि ये शिक्षा किस काम की जो हमें नौकरी नहीं दे पाती। अर्थ ये है कि क्या शिक्षा का दोष है या दोष हमारे तरफ से है कि हमने शिक्षा को सही रूप में नहीं लिया। So today's topic is how to convert education into opportunity. शिक्षा को अवसर के रूप में कैसे बदला जाए ताकि इसी शिक्षा का उपयोग करके हम अच्छे अवसर का इस्तेमाल कर सकें और अच्छी नौकरी में जा सकें। तो इस डिबेट की शुरुआत, इस डिस्कशन की शुरुआत सबसे पहले मनीष सोनी के साथ। Sir, I think it's a very good topic that how to convert our education in opportunity. But sir, I would like to tell one most important thing, that education is important. People have to understand that people always criticize that our education system is not like that, which can give us good opportunity. But I think I realize personally that education can give us too many things. Whether we are converted an opportunity or not, but once in our life we get the benefit of that education, that whatever we have achieved in our students' life, it will be useful for us in this time. So I think that the first focus is important, that we have to focus towards our education. But the second aspect of this topic, that how to convert education in opportunity. Here I think that there should be little bit changes in our education system. I think practical education should be there, because most of the time all students think that we are getting education and after that job is ready for us. But it's not true. They have to face a lot of competitive exam. They have to do some extraordinary study. They have to face some extraordinary adverse condition. Then they can get job. So I think that that's mindset is not good. That all students think that after completing my education I will get job. But that's what you say is right. But the question is कि why do we keep our education in such a fashion, in such a format where it is divorced from opportunity? The question is, why is it so? Why do we not change our education system a little bit, or we change our students a little bit so as to fit into this job opportunity world? Actually, sir, what happened? People think that we are getting education and sudden it will convert in minting money. It is not true. Education is useful for us not only for getting job, but after that how to live our life. The level of our life, the depth of our personality, too many aspects is there of education. So I think we should also consider it as a benefit. We should not always consider as a money, that after getting education there should be some source by which we can get mint money. We should not measurement our education with money. But education is something else. Manish, again I have one more question. Do you not think that the format of education, the concept of education has changed over a period of time? Now let's take example of ancient days. प्राचीन काल में शिक्षा का जो महत्व था वो रोजगार से नहीं था, क्योंकि रोजगार सबके पास था, कृषि सबके पास थी, भूमि सबके पास था। तो उस समय शिक्षा का महत्व था वो नैतिकता से, आचरण से, दुनियादारी से, जिंदगी से, धर्म से, ज्ञान से। परंतु अभी शिक्षा का इनके साथ साथ मटीरियल वर्ल्ड में टू ईक आउट ए लिविंग मीन्स हम अपना गुजारा चलाएं, इसके लिए भी हम शिक्षा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें। डू यू नॉट थिंक इट इज बिकम मोर इम्पोर्टेंट? Yes, sir, it's important, but sir, I think that other aspects is also important, which you have mentioned that आपने कहा कि पुरातन काल में जो शिक्षा चलती थी वो हमें नैतिकता सिखाती थी। कहीं ना कहीं सर वही नैतिकता हमारे समाज को आगे ले जाएगी। आप केवल व्यवहारिक बनकर, आप केवल प्रोफेशनल बनकर इस दुनिया को नहीं चला सकते। आप पैसा कमा लोगे, आप अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर लोगे, सब करते हैं। No one can like that who cannot earn bread and butter. एक रिक्शा चलाने वाला भी होता है तो वो भी अपनी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जीवन स्तर कहाँ पे है?
ये इम्पोर्टेंट है. So I think their education is important. हर्ष, मैं मनीष ने जो बात कही उससे बहुत हद तक मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं मिलान होना चाहिए, जहाँ पे नैतिकता भी हो, मूल्य भी हो, समाज भी हो, और साथ साथ में हम अपने जीवन यापन कर सकें इस बदलती हुई भौतिक संस्कृति में. We could fit into it. Where do you see? Sir, I think education is education. We can't divide education into ancient time, medieval time, and modern time. Sir, education makes us man. Education makes us human. And but present time, the situation is our education system, not education system. Our education skills and our education time change with the trend, sir. There is a Patwari vacancy at present time. Every single I think he become Patwari. After some time there is a Arakshak vacancy. Everything that he wants to become Arakshak. So the problem is our education system is not a practical education system. We only read things, we remember things, but we cannot convert that things into practical life. No, but the question is whose mistake is this? The same chapter is taught everywhere. Sorry, मैथ्स में वही परसेंटेज है, वही प्रॉफिट एंड लॉस है, वही रेशियो प्रोपोर्शन है, वही टाइम एंड वर्क है, वही टाइम एंड डिस्टेंस है, और वही एग्जाम में पूछा जाता है. लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अलग है. इस कारण से हम पास नहीं कर पाते, और कुछ जगहों पे इसको सही रूप में पढ़ा दिया जाता है तो बच्चे पास कर जाते हैं. तो do you not think that system is good, system is right, syllabi is also good, we do not get the good line to do this? Correct, sir. Sir, system is good, but people who control the system, they are not good, sir. The problem is those people who never ever complete any exam, they told us how to complete the exam, sir. Problem is this, sir. People thinking in just two months preparation, they complete any exam, sir. True, I got your point. Like, you see, the point is that 2 months preparation would not make you capable enough to complete an examination. There should be a desire for years together to study, and there should be a passion for something. Then you get the thing. आपका लंबे समय तक उस पे यदि विश्वास बना है, अध्ययन बना है, सही डायरेक्शन में आप अध्ययन कर रहे हो, तो शायद सफलता के करीब पहुंच सकते हो. This is what you want to say. Rishabh, we'll take your comment fast, and then we'll see the other people speak. There's a major difference between modern day education and Indian education is that when we compare our education with the Western education, the things that we are taught in the 3rd class, they study it in either in the 7th class or in the 8th class. So we have an edge in terms of education when it comes to theoretical training. But the only thing that is lacking in Indian education system is that of practical training. They are always given the practical means. No, how can you understand? For example, if you are being taught about a gravitational force, how does it work? Then in gravitational force, in Indian education they simply teach the theory, but in American education or in Japanese education, they give it the practical way. How does it work? So it's a kind of a pictographical training. It's a kind of a practical training which goes into your mind is more important. So there has to be a little bit change towards doing the practical things, which means also Manish, activity based teaching should be there. भारत में बिल्कुल सर. जनरली होता क्या है कि जो अब अपना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रेंड वर्षों से चला रहा है, the bygone state trend is going on in the same way. So somewhere or the other it should be changed with the passage of time. I think computer is new book of the fashion. I think there are too many things which is really important. But sir, we are following the beating path, so I think it should change with the passage of time. Okay, it should change with the passage of time. Everything should change with the passage of time. We should get prepared with a modern setup of things. We should face the challenges. We should get into it. Hari, where is your discussion going to? Sir, education. Sir, how we will convert education in opportunity? Sir, nowadays sir, everything has changed and opportunities has become so tough. And sir, it is not easy to get opportunity by getting only education. Sir, it's become moonshot. Sir, because sir, as her said, now Patwari vacancy has come, so everyone wants to become Patwari and Araksham. Everyone after some time, everyone want to become Araksham. Sir, it's everything has changed. Sir, we should have a
passion for learning. If sir, if we learn 1 and 2 books and we say we want to get opportunity, sir, it is not easy to. Sir, who has read several books, several books and other subject also they have read, and sir, they are unable to get opportunity. But what is the reason? Do you think that the strategy is different? The strategy is wrong to prepare. It's not important to read many books. It is more important to read a few books but with the right strategy. Yes, sir. Do you think that is important? Yes, And sir. then it does not become a moonshot work? Yes, sir. Yes, sir. We will. Firstly, sir, we will make a strategy and we will make a timetable, sir, and we will read by timetable, sir. It is easy to get opportunity by getting education. Okay, I'll come to you again. I'll come to you, but first I'll take some comment from Bubbly and then we'll come to you. Yes, So I Bubbly? think for converting education into opportunity, firstly we should focus on basic, because when we focus on basic, so automatically we will get opportunity. And sir, apart from it, we should not go about where crowd is going on. We should only focus where we are passion for which field we are good. We should focus on ये it. मनीष, इस बात पे हमेशा चर्चा होती है, लेकिन मैं तुम पे आऊंगा अभी तुरंत इस बात पे जिक्र करूंगा. पहले हम चंचला से उसके स्टेटमेंट्स ले लें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ. Yes. So despite work hard, students, some students are succeed, but some students are not succeed because we are not focused for basic and never give up keeping try. So one day success. Yeah, this is what Chanchala says, that this is in fact what Bubbly also said, that if we work hard, we do not get success because we do not focus. So there is a lack of focus. What is this lack of focus and how do you see it, Manish? I think some lack of focus is, I think it's also one fact that students do not have focus that in which field they have to go. So most important thing is that sir, who is doing counseling of that students? That's very important in place like Damo. Students want to get job. Students are doing their study for getting a job. They want to convert their study in opportunity. वो अपनी शिक्षा को सर एक उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, शिक्षा जॉब हासिल करना चाहते हैं. लेकिन सर सबसे बड़ी जो कमी है दमोह जैसे स्थान में वो काउंसलिंग की कमी है. वो रास्ता जिस रास्ते से जॉब हासिल की जा सकती है, वो रास्ता जिस रास्ते से कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस किया जाता है, वो रास्ता दिखाने वाले शायद यहाँ पर नहीं है. यही वजह है कि भटकाव बहुत अधिक है. बाहर के जो बच्चे जो रिजल्ट ला पाते हैं, जो उनका रेशियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने का और उसको क्रॉस करने का, वो शायद यहाँ पर नहीं है. और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि सही रास्ता दिखाने वालों की कमी अभी भी दमोह जैसे शहर में है सर. सही रास्ता दिखाने वालों की कमी है, क्योंकि जो रास्ता दिखा रहे हैं वो शायद स्वयं उस चीज को, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. सही रास्ता दिखाने वालों की कमी की जब बात करते हैं, एक सारे एग्जाम्स जब हम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मूलतः मेरे छात्रों के लिए है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सेक्शन होता है तर्क शक्ति का, यानी रीजनिंग का, जिसको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रूप में हम देखते हैं. इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन होता है मनीष, वो क्वेश्चन ये होता है सिलोजिज्म जिसको कहते हैं, और सिलोजिज्म का इसका मतलब होता है निगमन तर्कशास्त्र, है ना. और उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि सभी पेड़ गाय हैं, कुछ गाय बकरी हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. LIC, GIC, NTPC, ONGC, रेलवेज, SSC, MBA, IAS, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं और लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं. नाउ जब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अधिकांश जगहों पे हमने देखा ये गोल गोल बना के करते हैं सॉल्व, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो पाई डायग्राम के रूप में, ऑल ट्रीज आर काउज, सम काउज आर बुक्स, सम काउज आर, ऐसे बना के करते हैं. जब आप ऐसे बना के करते हैं और हमारे टीचर्स भी ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को, तो 10 में से 6 ही सही कर पाते हैं, 4 तो गलत होते ही है. लेकिन इसकी जगह पर यदि बच्चों को उनके रूल्स सिखा दिए जाए तो वो कभी गलतियां नहीं, और 10 में 10 सही होगा. रूल्स क्या है? रूल्स है बारबरा सिलारेन डेरियाई फेरियो बारोको फेस्टिनो केमिस्ट्रो सिजार इधर आपकी दतीसी फिलेक्ट्रॉन बोकाडो फिसाको फिजिशियन. नाउ एक बार जब हमने फंडामेंटल सीख लिया तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारे एक क्वेश्चन को गलत कर दे. तो ये हमारा ज्ञान है, लोग इसको घमंड समझने लगते हैं. लेकिन वास्तव में जो आपने कही बात कि फंडामेंटल्स की फोकस होने की वो कमी है, तो बच्चे भीड़ लगा के कहीं भी पहुंच जाते हैं बिना जाने हुए कि 20 और 30 का औसत हमेशा 25 नहीं होता, कहीं कहीं इसका औसत
24 भी होता है जब हम इसको टाइम एंड डिस्टेंस में देते हैं। ये फंडामेंटल, ये बेसिक हम मिस कर रहे हैं। सो यस मनीष। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। It's a very true that students should know that from where they have to get education. Actually, what happens, most of the students have not this much money, and they can go out and they can get education from higher institution. They only try to find opportunity within their sources. So I think that is also very important. Right, Sir. they do not have money to go out. Any more comments from Sir, here? I want to say something. Sir, money is not a speed breaker in the education. Sir. Government gives us a scholarship. Government gives us so many privileges, and apart from that, there is some educational loan also, sir. The problem is the direction, sir. We don't get a right direction because those people who are not able to do anything in life, they tell us how to do our work. But here my difference is that it is wrong to say that we do not get right direction. You do not want to take right direction. You have mobile, you go to mobile and you read everything from mobile. Yes. Why do you not search? Why do you not search for a right direction? There are 2-3 teachers who are giving right directions to the whole country. Now people are going there. किसने बताया उनको कि यहाँ पे जानकारी होगी? तो हम नहीं पाना चाहते हैं direction. Yes, Rishab, you want to say something? There is a difference between a new trainee and experienced one. Elaborate, Prasad. Yeah. Why a lot of companies they prefer this new trainees because they haven't done a lot of things and they are easily plug and play. So that's why the person who do not have preconceived notions about something, they're able to get trained and directed easily. That's true. Yes. Sir, I'm totally disagree to us as he said, and who are not educated and they give direction for doing this. So why we listen to them? And so there also have many several teachers who give good direction, sir, as you, and so we also have a mobile and internet, and we can go and we can know everything on internet. I have a perfect answer for your question. There is two things. There is one is a law of attraction. People always attracted by the wrong things first. The second thing is when you get mature, then you realize what is good and what is bad. And when we get a good direction in your immaturity age, at that time we get success in a short term. We get success in an early age. But if you want a long-term success, you get a good direction. You see, there was one discussion where we started that जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं मनीष, सारे बच्चे उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। प्रश्न ये है कि वही विषयों के प्रश्न तो फिर आगे भी पूछे जाएंगे और भी एग्जाम्स आएंगे साल भर बाद भी, तो पहले से क्यों नहीं तैयारी करके रखते? गणित है, अंग्रेजी है, तर्क शक्ति है, कंप्यूटर्स है, ये तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ती है बच्चों को कि एग्जाम के पहले वो तैयारी शुरू करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ईमानदारी की कमी है। So I think, sir, we cannot say that they are not honest. Actually, sir, they are really very honest. They are like a febrile mud. एक जो कहते हैं गीली मिट्टी है, उसको सही डायरेक्शन में उसको घड़ा बनाने की आवश्यकता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। नहीं मनीष, मैं यहाँ थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। बच्चे मासूम होते हैं, ये वो होते हैं जो स्कूल के होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, उनको समझ है, उनको दुनियादारी सारी चीज की समझ है। वो ये जानते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये भी समझ में है उनको। तो हम कभी-कभी गलत डायरेक्शंस देते हैं। आर.एस. अग्रवाल को देख ले, आर.एस. अग्रवाल से नोट कर ले, जो आदमी आर.एस. अग्रवाल हमेशा करेगा, वो आगे डेवलप नहीं कर सकता अपने आप को। तो आप इस बात को कैसे कर सकते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी है? बच्चों को अक्ल है, बच्चों को समझ है। तो कहीं हमारे यहाँ मेंटर्स, जैसा कि हर्ष ने कहा कि मेंटर्स का भी एक बेसिक रोल होना चाहिए। बिल्कुल सर, आई थिंक they also should be honest. They also should give honest advice to them. Actually, what I realize that nowadays, sir, it's become new fashion as far the coaching institution is concerned. After Khan sir, when he became the hero of India, like Kapil Sharma show, that it's become the new vogue of India, and all try to become a Khan sir. They do not have their base, despite they want to become Khan sir. So that's sorry sir, I am interrupting. That's the problem, sir. Everyone wants to copy others, sir. They don't want to develop themselves, sir. Actually, the problem, sir. Actually, what happened that before this trend, it was not a glamour thing. Yes. But now it's become glamour thing.
It's a new fashion. The most of the students are following them. As far as the followers on YouTube and Facebook is concerned, I think many So that way teaching has become, this way has become a very good profession. Rishabh, what is your view about this kind of a teaching which has developed recently in terms of guiding, mentoring and guiding students? I think this consultancy business is really growing currently. But the thing is that once you imitate others, then you are also playing with the career of the others. Very good, Once right. you do not have the great and good knowledge about yourself, about what Subject. about the subjects in different fields, what you can do, and then you are guiding others. Then you are also playing with your Yes. career, and then you are playing also with others' career. So be careful, all the students be careful कि ऐसे ही किसी को जाके फॉलो ना करें, ऐसे ही किसी के टिप्स को और एडवाइसेस को ना लें जब तक वो एक एस्टैब्लिश्ड मेंटर ना हो, जब तक उसका नाम एक एस्टैब्लिश्ड मेंटर के रूप में ना हो. डोंट टेक ट्रेनिंग्स फ्रॉम देम बिकॉज़ कई बार हम मिसगाइडेड भी हो जाते हैं. Gabri, would like to say something more? Yes, sir. So, there people not want to pay money for education, and they always try to go there where field is going on. So they try to get education in very real money. They never want to spend more money to जो education. भीड़ में बैठकर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं उसमें 50% छात्र भीड़ के पीछे ही जाते होंगे. Yes, sir. Definitely. But sir, nowadays education getting education is very easy because sir on YouTube sir we can get everything easily. Sir, as you said, Khan sir's all videos we will get free of cost. I want to interrupt one more time. See. Sir, let me complete it. Sir, education is not free. I disagree with it because education get some attention. Education wants a discipline. Education wants a consistency. When this type of thing we get the education, then education give us result. I would like to tell something here. It's very important. दो बार आप लोगों ने खान सर का मेंशन किया. It's true. It's good to mention because he has become an iconic character. But again, Khan sir is very good once you take the preliminary round of examinations. Yes. But when you write mains, he is not. क्योंकि उसमें आपको लिखना होता है. उसकी शैली होती है. लिखने में आपको कॉम्पैक्ट लिखना है. वो आपको सिखाया जाता है कई जगहों पे. तो आप किस प्रकार से अपनी बात को रखें, किस प्रकार से कम शब्दों में 100 शब्दों में रखें, वो एक अलग बात है. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स बनाना या किसी सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट देना वो अलग चीज है. Yes, Manish, I think, sir, it's quite good. But sir, I think we are talking about, sir, Patna level. We are talking about Bhopal. We are talking about we are talking about metro cities level. But as per the place like Damoh is concerned. sir, I think the most important thing that the mentality of people is not good towards education. Yes. They can invest money for property and too much, but they cannot invest money for education. So that is the lack of awareness. That is the lack of consciousness towards education. Place like Damoh, they can waste money for their clothes. They can waste money for their all luxurious life, but they cannot invest money for education because they think that there is no any future of this field. So I think somewhere or the other, sir, people have to change their mentality. They have to really conscious about education. They have to be really what we can say. They have to be do special budget for education. I think that for marriage ceremony we save too many rupees for it, but we are not save single penny for education. That is also, sir, a big what we can say impediment of education. And But why is it so? Why is it so? ऐसा क्यों है कि लोग शिक्षा पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं? What is the basic reason behind this? Because they Lack of don't know the awareness. value of the education. सर मैं यहाँ कहूँगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है. मैं जो पिछड़ेपन की जो वजह चलो है. एक मिनट में इसका हम लोग लेते हैं आंसर सब लोगों से. क्यों लोग शिक्षा पे पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं? Yes, Hari. Your turn. Sir, because they think if now we are investing money on education, Right. so I think they will not get success easily. Right. If we will save money for doing something, Right. so sir we will save money for long. शिक्षा पे पैसे खर्च क्यों नहीं करना चाहते हैं? So we should start the hard and soul. We should start the study hard and soul. So you will get success of one day. Okay, यदि हम पढ़ना शुरू करें सिंसियरली तो लोग पैसे भी खर्च करने लगेंगे उस पे. Yes, Vishnu.
The main reason behind this is that currently they are satisfied with their life, whatever they are doing. ओके राइट, वो लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो गए हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। यस सर जो लोग शिक्षा को पाना चाहते हैं सर वो जरूर पैसे खर्च करते हैं, और जो पाना ही नहीं चाहते सर वो सिंगल मनी भी नहीं उस पे So spend the करते। best reason behind the illiteracy, they are not want to pay education, money for education, career instability, career security, because they are parents. Parents wants that their kids settled, well settled, they make money, but at end of the day, this is not 100% guarantee you get success. So career insecurity is the Right. The career insecurity is there, but that is why they don't spend Yes. money. Yes, Manish, what's your take and your final take? I think sir trend should be set, है ना, एक ट्रेंड बनना चाहिए और कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कहीं छूटा हुआ है, कहीं उसकी कमी नजर आती है कि शिक्षा के प्रति जो हमारा नजरिया है वो जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको पूरा जीवन रिफंड करेगी। ये बात जिस दिन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी, ये जो पूरा इलाका है सर, ये अपने आप में यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करने वाला था, जहां पे मनीष सोनी ने अपनी बात कह दी। मुझे ऐसा लगता है कि सोना गोल्ड की कीमत बढ़ती है, रुकती है, जमीन की कीमत रुकती है, बढ़ती है, मकान की कीमत भी रुकती है और बढ़ती है, परंतु एक ऐसी चीज जिसकी कीमत ना रुकती है ना घटती है, सिर्फ बढ़ती है, वो है शिक्षा। और शिक्षा पर आज यदि हमने इन्वेस्ट किया और सही ज्ञान प्राप्त हुआ तो नॉलेज इज द रियल पावर। नॉलेज इज वन थिंग विच विल गिव यू पावर, नॉलेज इज वन थिंग विच विल गिव यू मनी, नॉलेज विल गिव यू रेपुटेशन, नॉलेज विल गिव यू रिकॉग्निशन। तो ज्ञान जो है किसी विषय का, सही ज्ञान, आधारभूत ज्ञान, अच्छा ज्ञान उस विषय का या किसी अन्य विषय का यदि आपके पास है तो आपके पास सम्मान भी है, आपके पास धन भी है, आपके पास नाम भी है और आपके पास खुशियां भी हैं। और यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी कम नहीं हो सकता। सो प्लीज फॉलो दिस रूल एंड ट्राई टू गेट टू द बेसिक्स। फंडामेंटल तक पहुंचे, ऐसे लोगों को पकड़े जो आपको फंडामेंटल बता सके, और इसी फंडामेंटल के आधार पर हम शिक्षा को रोजगार में और रोजगार को और भी रोजगारों में न केवल परिवर्तित करेंगे बल्कि रोजगार देने की स्थिति पे भी रहेंगे। सो आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण मीनिंगफुल विषयों के साथ हर सप्ताह हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।